गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज का दिन कैसा रहा आपका? क्योंकि आज तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मतलब कुछ लोगों को आज बहुत खुशी हो रही है देख के कि मैं क्वांट वर्बल डीएल। एक खुशी मुझे क्या हुई है कि एग्जाम खत्म हो गया। तो आज ये थोड़ी खुशी हुई है मुझे। बेसिकली मतलब हम जैसे टीचर कितने लोगों को सुबह से शाम कितने लेक्चर देते हैं कि काम रहिए, कोई बात नहीं, टेस्ट होते रहते हैं। लेकिन जब खुद टेस्ट देना होता है, मैं कभी नहीं चाहता मेरा थर्ड स्लॉट हो। मैं हमेशा चाहता हूँ Slot-1 हो, जल्दी काम खत्म हो, ऑफिस जाएं, काम शुरू करें। लेकिन आज का दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस रहा हूँ 2 बजे, 3 बजे की रिपोर्टिंग था Slot-3 के थे। 2 बजे तक कोई काम नहीं कर पा रहा था। जस्ट वो एक मतलब कहने को है, सबको हम क्या बोलेंगे कि टेंशन नहीं होनी चाहिए, सब बड़ा आराम से हो जाता है। मतलब यू मस्ट हैव ए काम माइंड, काम थिंग्स एंड एवरीथिंग। लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो इट वाज जस्ट द सेम काइंड ऑफ टेंशन यू डेवलप। मतलब 2 बजे तक मतलब यू इवन कि खाना भी मतलब मुश्किल से अंदर जा रहा है। तो मुझे मुझे ये मतलब मुझे जब मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं स्लॉट पे अपने पहुंचा तो 2 दिन तो हमारे स्टूडेंट्स मिल गए वहां पे। वो मुझे देख के समझे कि मैं उनको मतलब जैसे होता है ना कॉन्फिडेंस के लिए आया। मैंने कहा नहीं, मैं खुद अटेम्प्ट कहते सर फिर तो मैं हमारा परसेंटाइल और भी गिरने वाला है आज। तो बेसिकली आज क्या हुआ कि मुझे एक और एपिसोड याद आ रहा है, कैट 2016 का एपिसोड है। उसने पहली बार हुआ था कि उसने जूते उतरवाए पहले। मतलब पूरे सेंटर में पहले उसने कहा कि पहले जूते बाहर उतारो। मतलब जैसे ऐसे मंदिर में नहीं जाते हैं कि कीप यू ऑल द शूज आउटसाइड एंड लेट्स मूव इन। सो व्हाट द सिचुएशन वाज कि ऑल द शूज आर लाइंग आउटसाइड द सेंटर, जस्ट लाइक यू विल फील कि कोई मंदिर है और सबने अपने जूते उतार के अंदर गए हैं। आज एक नई चीज क्या डेवलप हुई कि उसने मेरा मेट्रो कार्ड पकड़ लिया। अब मैंने ये सोचा था कि मैं 3-4 स्टेशन दूर में और जनकपुरी ऑफिस से द्वारका मोड़ पे मुझे जाना था। तो मैं व्हाट आई थॉट वाज कि एक मेट्रो 2-3 स्टेशन है, मेट्रो वेस्ट है, वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है तो मेट्रो को भी ग्रेट। तो वो मेट्रो कार्ड पकड़े बैठ गया जी। कहता है कि मेट्रो कार्ड आप नहीं अंदर ले जा सकते। मैंने कहा तो मैंने उसे फिर कहा, मैंने कहा आप ही मेट्रो कार्ड रख लो, मैं आप जाते हुए ले जाऊंगा। द होल पॉइंट इज मतलब जिसे कहें कि मे बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वट एवर, आई डोंट नो, बट वो मेट्रो कार्ड से भी उन्हें लगता था कि चीटिंग हो जाएगी कुछ ना कुछ। अच्छा, व्हेन आई रीच द हॉल, अब हॉल में सीटिंग कैपेसिटी है 100 की और बच्चे देने आए 10। मतलब आप ये सोच के देखो कि 100 बच्चों ने, मतलब एक अगर सैंपल साइज लेते हैं, 100 बच्चों ने 2,500 रुपए भरे कैट के लिए। और वो उस चीज को अटेम्प्ट भी नहीं करना है, देखने भी नहीं आया कि टेस्ट होता क्या है और चलो देखें कि कैट क्या होता है। तो मतलब मैं जो इन्विजिलेटर थे, मैंने उनसे पूछा कि मैं सही जगह हूँ कि नहीं, मतलब ये नहीं। कहते सही जगह है, अभी तो Slot-1 Slot-2 में सब आए थे। लेकिन Slot-1 Slot-2 की जो खबर फैली कि कैसे एग्जाम आ रहा है, तो Slot-3 में मेरे हॉल में 100 में से सिर्फ 10 बच्चे वो प्रेजेंट। सो एक मतलब कहने को है कि 3 लाख बच्चे बैठ गए जी, 2.5 लाख बच्चे बैठ गए। बट नो, ओवरऑल इफ यू लुक एट द सीरियस अटेम्प्टर्स, दे आर एक्चुअली द सेम, the people are the same, and we teachers obviously would be. हम तो until unless we will experience it, how you will teach good. अच्छा, ना अपने अपने आप एक्सपीरियंसेस देंगे आप। आई थिंक अंकुर जी Slot-2 में थे, शरील और सागर वो इन Slot-1। मैं Slot-3 से स्टार्ट करता हूँ। अभी अभी आया हूँ तो थोड़ी सी चीजें, मैं जब आ रहा था तो मैं जॉट डाउन कर रहा था, एक अपने सॉफ्टवेयर में लिख रहा था। देखिए हाउ इट ऑल स्टार्टेड। आई थिंक बेस्ट वे कैट का अटेम्प्ट, मतलब कैट का तरीका है कि VARC वो स्टार्टिंग में लगा देते हैं, वो सही तरीका है। बेसिकली क्या है कि आपको हिट पहला हिट जो इंजीनियर्स को बड़ा अच्छा हिट आता होगा कैट से। ऑब्वियसली अभी हम क्या देख रहे हैं कैट में, वही सेम पैटर्न। अगर तीनों में देखें तो तीनों में 8 थीटा क्वेश्चन थे, चाहे आप VARC ले लो, चाहे DLR ले लो, और चाहे आप क्वांट ले। क्वांट वाज इजी, DLR वाज आल्सो इजी, VARC इजी था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड
एज ए स्ट्रैटेजी वी स्टार्ट विद थीटा क्वेश्चन। क्यों थीटा क्वेश्चन? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नथिंग टू लूज है, तो वहां से आप स्टार्ट करें। तो आई स्टार्ट विद द थीटा क्वेश्चन, वही सेम, वही पैरा समरी, दो पैरा, वही पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, दो क्वेश्चन। नाउ आप अगर तीसरे, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मॉक में जब हम चारों आरसी अटेम्प्ट कर जाते हैं, फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड इन द रियल टाइम्स इज कि द फोर्थ आरसी में अटेम्प्ट ही नहीं करता है। मतलब आई लुक्ड एट ऑल द आरसीज, फाउंड आउट कि 4 आरसी से, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा मैं लिख रहा था कि क्या क्या आरसीज थे। आई जस्ट शो। So let me start with what exactly was a CAT 3, जो Slot-3 था, उसका पैटर्न क्या रहा। ठीक है, जो फर्स्ट आरसी था वो डस्ट कॉलोनी पोल्यूशन पे था। बेसिकली थोड़ा सा इसे आप कह सकते हैं मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल था इसका। सेकंड वाज रोमांटिक्स इनटू एस्थेटिक्स, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप था, तो मैंने इसे सोचा कि थोड़ा सा आई लुक इनटू द पहले दूसरे आरसी देखेंगे, फिर आई विल कम टू द रोमांटिक्स थिंग, दीज थिंग्स। तो ऐसे स्ट्रैटेजी जस्ट लाइक वी डू, पहले हमने ये 8 थीटा क्वेश्चन को हिट किया। जब 8 थीटा क्वेश्चन हिट कर दिए तो द टाइम विच आई वाज लेफ्ट विद अराउंड वाज 20 to 25 मिनट्स। तो अब थिंकिंग वाज कि कैसे इसे करना है। तो यूजुअली आई रीच द आरसी थिंग इन अराउंड, मतलब जब अराउंड 25 से 30 मिनट होता है, लेकिन आई लॉस्ट क्लोज टू 5 मिनट्स मोर इन द थीटा दिस क्वेश्चन, द वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस। द पैरा समरी क्वेश्चंस वर इजी, जंबल फॉर इजी, पैरा कंप्लीशन में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, so I spent some time with the para completion part. Now, these are four RCs I started with. The first RC I started with was the art law source country. ये RC क्या था कि जैसे कि कोई कंट्री एक कंट्री से एक दूसरे का आर्ट लेके अपने अपनी कंट्रीज में ले जाते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन सारे जब कॉलोनियलिज्म हुआ तो इंडियन सारे वहाँ चले गए यूके में, और ऐसे ही सभी जो कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द आर्ट वर्क हैज मूव टुवर्ड देयर गैलरी। तो एक लॉस जब बनने लगे, आर्ट लॉस एंड ऑल, तो उस लॉस में इन सब कंट्रियों को वो आर्ट वापस करना था, चाहे वो पेंटिंग्स है, चाहे वो स्कल्पचर एंड ऑल। तो हर कंट्री के आर्ट के लॉस बने। तो उस आर्ट लॉस की वजह से कुछ पॉजिटिव्स हुए, नेगेटिव्स हुए। जैसे कि अगर लॉ बन गया कहीं आर्ट का कि ये आर्ट सोर्स कंट्री को ही बिलोंग करेगा, मान लेते हैं कि कोई और कंट्री या फॉरेन कंट्री उस आर्ट को अपने कंट्री में ले गया है, बट देन आल्सो दैट हैज टू बी रिटर्न टू द सोर्स कंट्री। So that was a total I would say the storyline behind these paragraphs. 4 to 5 paragraphs, medium difficulty level, and the last part of it was the China. They were giving an example of the China art law, in which they were talking about that how the art laws, because of the art laws, the foreign countries are not very keen in expeditions into any other country. Reason being because the art will then also belong to the source country. So what is the fun? What is the positives they are getting? What is the thing they are getting out of the excavations or getting the art from any country? तो ऐसा सिंपल मतलब स्टोरी लाइन था, पूरा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मॉडरेट डिफिकल्टी। अब क्वेश्चंस कैसे थे? मेन आइडिया क्वेश्चन एक दो इन्फर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, लेकिन एक फोर्थ इन्फ्रेंस का जो क्वेश्चन था वो एक्सेप्ट क्वेश्चन था। जैसे कि इन सब में से विच इज नॉट appropriate explanation of it, yeah, all these explanation are correct except this one. So वो inference का जो सबसे tricky part था वो इन passages में देखा, तो it was taking time. The second was a climate change. This was easy one, लेकिन अगर untrained mind है तो ये थोड़ा सा difficult part है। इसमें story line क्या था? हम क्लाइमेट चेंज को कैसे देखते हैं? मेजरली क्लाइमेट चेंज को क्या देखते हैं कि जब कोल जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1940s, 1920, 1930s, 40s, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स,
coal things and everything. The first paragraph was talking about the climate change relevant to the coal thing or the petroleum thing. But when it started, when उसके बाद क्या उसने start किया कि it is not about the only that climate changes. It is also about the colonialism. For example, they gave an example of Indonesia in which the Britishers, when they came to the country, उन्होंने nutmeg का cultivation start किया. Nutmeg एक ऐसा spice है जो कि क्लाइमेट चेंज से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि उस बड़े शैलो रूट्स होते हैं. तो क्लाइमेट चेंज का छोटा सा भी अगर आपकी कोस्टल कंट्री है और कंट्री अगर आप ओशन से यू आर सराउंडेड बाय द ओशन, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन इज any strong wind will actually destroy the whole crop. So what they started, the whole paragraph turned into the climate change is not only about the coal or the petroleum products, but it is also about how the things which were introduced to the country which was invaded, how that actually prevailed or changed the climate or changed the total ecosystem. So that was the total storyline. तो थोड़ा सा easy moderate कह सकते हैं, अगर moderate है उनके लिए जो clarity of thought नहीं है. जिस थर्ड कोई मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट मारा है. This was the first thing, this was the second thing, and this I went to the third thing. So more of a philosophical one, लेकिन easy one था. लेकिन the whole thing was, even this one was easy. The whole problem lied with the time. Okay, so when I was just moved to the first one, so basically I ended up attempting maybe 20 to 21 out of 24 questions, but yes, accuracy level would be around 90%. तो मेरे ख्याल से जो इसका कट ऑफ आने वाला है मार्क्स में अगर देखा जाए तो 42 above या 44 above would be taking you to 99.50 above than that. Okay, now talking about the DILR part. DILR में 4 सेट्स आए, 5 क्वेश्चन वाले. और जैसे कि हमने जैसे लखनऊ का जो कन्वीनर्स हैं उनका अगर हम कॉम्पिटेंसी देखते हैं तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस था. Basically, most of the questions were stats related. Most of the questions were dealing with the maximum, minimum, average, weightage, and all. The first set was in which there were 3 male students, 3 female students, and they were they were taking test or a project, and they were getting the marks in test in the project, and the maximum, minimum, average, and weightage, some relations were given. So if you are able to make the table out of it, let's say it didn't involve much of the very complex calculation, but बड़ी easy calculation में अगर आप table form कर पा रहे हैं तो it was easy to hit. More of a statistical with some calculation involved question. The second was the coaching company thing. इसमें क्या हुआ? The people are getting admitted in the online, offline and hybrid models. तो hybrid models में वो कहते हैं कोई admission नहीं हुआ. Online, offline admissions हुआ है. मंथ वाइज एडमिशन दिया हुआ था और उसको सम टैबलर आप ये भी सेम टेबल अगर आप बना पा रहे हैं तो टेबल में सेम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज दिया हुआ है कि इस महीने ऑनलाइन डबल हुआ, ऑफलाइन इतना हुआ, इस महीने ऑनलाइन एक्स हुआ, इसमें वाई हुआ. तो बेसिकली सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन, सिंपल टैबलर फॉर्म एंड यू वुड बी एबल टू हिट इट. तो इसे भी इजी हम बोलेंगे. एक तीसरा ये ट्रिकी पार्ट था. इसमें ये क्वेश्चन आए एसी डीलर से, 4 एसी डीलर्स से जो स्प्लिट और विंडो एसी बेचते हैं, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर. तो चार फॉर्मेट्स हो गए. एक तो आपका ये स्प्लिट वाला विंडो और एक इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी वाला. तो इसमें भी मंथ वाइज दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज दिया है, मंथ वाइज सेल दिया है और वही टैबुलर फॉर्म की जनवरी में D1 D3 ने सेल इतना किया, D4 ने D2 ने स्प्लिट इतना किया, इन्वर्टर ने D2 ने किया. D1 का टेबल आराम से बन रहा था. ये D1 वाज वेरी इजी टू मेक, D2 में स्ट्रगल हुआ, D4 हुआ, D3 वाज इजी टू मेक. सो बेसिकली अगर आप टेबल बना पा रहे हैं तो यू वुड बी एबल टू हिट दिस क्वेश्चन. ये भी इजी है. बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि
मे बी ट्रेन माइंड के लिए इजी हो, लेकिन चारों डुएबल थे। थर्ड में एसी डीलर्स में एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डाइसी लगता था, लेकिन फिर भी रिस्क लिया क्योंकि वो ये उठा लिया था, तो क्वेश्चन पूरा करना था। फोर्थ क्वेश्चन वाज दिस पुलिस स्टेशन पेट्रोल टीम थिंग, what exactly this is. Now these are the five 1 2 3 4 5 6, these are 6 police stations, and there are patrolling team which are moving through them. Okay, so inter police stations se patrolling ho raha, these are streets actually. Okay, now 9 से 12 बजे तक पेट्रोलिंग होता है. Every patrolling party takes 30 minutes from one station to another station moving. In that way, what exactly was happening was कि इसमें आप एक डिफरेंट कंडीशंस दिया हुआ था, जैसे कि ई में 10:15 पे ए और बी टीम यहाँ है, डी जो टीम था या फोर्थ टीम था वो बी में कभी नहीं गया, मतलब बेसिकली वो 4-5 कंडीशंस दिया होता. एंड दैट इज ऑल्सो, अगर आप टेबल ठीक से बना पा रहे हैं और कंडीशन डाल पा रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन इजी में आता है. ओके, अच्छा मैथ्स का. नाउ कमिंग टू द क्वांट पार्ट. क्वांट में आई थिंक क्वांट तो आप सब मेरे से अच्छा ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इजी पार्ट था, और जस्ट लाइक अलजेब्रा अरिथमेटिक 80% वही कैरी कर रहा था. फंक्शन के कुछ क्वेश्चन, ये सब मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आई थिंक नॉन इंजीनियर्स के लिए बिग स्ट्रगल रहेगा, लेकिन इन ओवरऑल इजी क्वांट बेसिकली कंपेयर्ड टू द वर्बल एंड द डीएलआर पार्ट, क्वांट वाज मच इजियर टू हैंडल. तो अब आप अपना कैरी कर सकते हैं जो भी स्लॉट वाइज बता पाए. अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ. आई टेल यू अबाउट Slot-1, जो कि बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस रहा मेरा आपसे. सबसे पहले तो इवन बिफोर द पेपर मेट्रो स्टार्ट, सेम एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड विद मी एज वेल. आई वाज विद अ फ्रेंड इनिशियली, तो the place I went, it was the Gun International School. It is near Munka side. So at that place only there are 3 centers inside the school, and every center had like 5 to 6 labs. Looking at how many people were there, first of all, there was a issue with traffic because all the people were, parents were dropping their kids in cars and all. So you had to leave the center early, first of all. वरना आप इसी में ही बहुत टाइम डिले हो जाता है. Then once you reach the center, same thing, I gave my belongings to my friend, and I was like, I'll carry my metro, and because it's ticket, I'll come back. But same thing happened over there also. They said the metro card is not allowed. So I deposited over there. Another thing which happened was that they just, I don't know if that is the case with everyone, but they asked for another ID proof, just in case if you have it, to check it out if everything is valid. So I did. So two ID cards. 2 ID proofs. Like I had my Aadhaar as well as PAN card with me. Achha, okay. Okay, I kept it just in case, but it was asked also. Okay. Then going to when it started initially, coming to first of all part of ERC, I will say that for the starting with the RC sections, there was no clear thing such as that this is easy or this is difficult. It was pretty much moderate, all 4 of them. The topics were, all of them, there was topics from anthropology as well, which said how geography is a factor in how civilization shaped themselves. Then there was one which said that colonialism existed even before Britishers came, but it was in other form. It was due to the technological advancement in navigation that they were able to spread it so much. For literature, there was also another one in which it was about Indian Ocean authors, about like they covering this area only of Africa, Southern India, and all of them, and how this has a different approach compared to European or American authors, in which you'll find that those authors are more about based on an ideal character of a white man, who has everything in
set out from pretty much the whole idea is different over there. So difficulty-wise, there was no such issue. But I also faced the same problem, which was that completing all the answers in time. Uh, by the time I started, I did first, second, third. Then when I went to the fourth one, I saw that it will take some time, so I started with the VA part. I had enough time left. I said I'll come back to this. Then going to the VA part, I will say that the difficulty level of the question was uh, easy to moderate. There was no such question which is fine. Other than I think one or two, but you can always skip those ones. Um, there was about para completion as normal para general, so nothing out of pattern. The same as last year basically. Nothing too much. तो कितना कट ऑफ कितना आपको लगता है कितना इज ए गुड अटेम्प्ट? I think if you're talking about accuracy, then if you have like 80-90% accuracy, and if you are attempting like 20 questions, with that 20-21, that should be fair enough. Then coming to the DILR part, here I feel the particular issue. It was about time management. But as it is often said that in the case of DLR, you should always be sure to select the right set for you, even before you started. So I read them all. The one which I found what the investing was, there was one of regarding housing issues in which it was the, let's say there are two blocks in which there are 6 houses each. If some of them are occupied, some of them are to be sold. There were certain clues given, and you had to basically say which one will cost that much and how many. This arrangement basically, you'll be doing that over there. Similarly, there was another one which also I found moderate level, which was basically about uh, going to visa application center for US, UK, and 2 other countries. And over there, the slot timing were given and the timing in total. Then how many applications come. Then they give you some variables like they were these people came, they came, and you have to basically tell them exactly how much an application were totally coming given the host. But as soon as I was done with the two, I found that there was not enough time left for the third and fourth one. I did try my best, but I think if you are able to do 2 or 2.5 sets with good enough accuracy, that should be enough. Uh, Coming to the part of one, there was no major difference as such. Pretty much the same as previous years as happening. In quant, as usual, there was algebra, there was arithmetic questions. Arithmetic was mostly in theta format, as usual. And similarly, with the case of geometry, there was a very interesting question like they gave you the clock, like the time is 8:48, and given the angle which is right now, what should be the time in the clock that the angle increases by 50%? Okay. So as such, concept-wise, I don't think if you have tried enough questions, you should be able to answer all majority of them. But it is mostly about changing the right questions as well, because there were certain questions which were time consuming. You had to know that these were the ones you have to skip because they'll occupy a lot of your time. Similarly, the logarithm questions, roots and all, everything was, I would say there was nothing. If you are well prepared and you have done the mocks of previous years, you should not find anything surprising about this one. Difficulty wise, I'll say the slot was moderate. It was not easy, but it was not hard as well. If you have occupied, if you have studied well enough, you should be able to score decent marks in that. Uh, but one thing I found in this particular plot was that all the 3 sections were very time consuming. So you had to be very selective in which question you were doing. Because if you waste your time on any question, chances are you'll lose out on easy marks somewhere else. करेक्ट. सो बेसिकली टीटा क्वेश्चन क्वांट में भी 8 8 8 का ही सेम ही चीज था.
Yes, sir, pretty much the same, and most of them were in the arithmetic section, which I think they So are basically, starting to do as 8 in quant, 8 in DLR, and 8 in VR, same change. Yes, sir. Okay. Yeah. So for Slot-1, I think that will be all from my side. There was nothing which was very surprising which came, but you had to be very clear with how you are selecting the right questions and how you are managing your time. तो बेसिकली ना अगर हम क्वांट का देख रहे हैं तो स्टार्टिंग की जैसे स्लॉट 3 का अगर मैं ध्यान से देख रहा था, यू स्टार्ट विद अलजेब्रा क्वेश्चन, जैसे 5 अलजेब्रा के ही आते हैं, फिर 5 अरिथमेटिक के ही आते हैं, फिर बीच में मॉडर्न मैथ्स आता है, मैक्सिमम मिनिमम और फंक्शन जब आता है, मैं मानता हूँ नॉन इंजीनियर्स के लिए विल बी ए बिग चैलेंज. सो लेट्स, अगर वो 2-3 क्वेश्चन नॉन इंजीनियर्स के लिए हटा देते हैं, अगर फिर देखें रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स आया, वर्क टाइम आया, 2 वर्क टाइम के क्वेश्चन आया. तो अगर वर्क टाइम ले लें, मिक्सचर्स ले लें, एक बोर्ड का आया डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, तो इजी. मैं रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर्स, मेरे ख्याल से 10th लेवल जो है, अगर 10th लेवल का बच्चा होगा वो भी उसे आराम से हिट कर ले. हाँ जी. अब अंकुर जी आप करना चाहते हैं, शरील आप? I also attempted Slot-1. So most of the analysis is given by Sagar, so I totally agree with him. So for the VARC section, I found the section to be moderate. And if I see, like, there were no surprises as such. If I compare it with CAT 22, almost the pattern was same. I think odd one out was missing previous year, and this year we had odd one out. But if I see the overall difficulty level, I think it was moderate, and the pattern was also same. So, mentally, I think students, I think even I was prepared for the same pattern. So it was not a shocker for me. Like, we had 4 passages with 4 questions each, and then we had verbal section. And this time we had 4 theta-based questions. So I think that was also an advantage for us. Like, odd one out and the para jumbles were theta-based. So, if we attempt them, there were no negative marking. So I think verbal section was, moderate level. And we had 2 from para jumble, para summary, para completion, and 2 odd one out. So I think verbal section was pretty sorted. And if I move to the reading comprehension, we had 4 reading comprehension. I think I found one passage to be a bit on the difficult side. Otherwise, the rest 3 were pretty easy. So, yes, the first passage was regarding the return of wolves in the French region. I think that was a very factual-based, passage. So that was pretty easy to attempt. And then we had something related to the economies in North and South Korea, Indian Ocean literature, as mentioned by Sagar, and then materialism. So if I see, like, in all the passages, there were questions that were doable. Like, obviously, there were questions, as in your slot also, sir, there were questions such as accept and inference based. Over here also, but all the, questions are mixed. Like, there were direct questions also, and there were questions that were tricky, inference based and even accept based. Like, like, let's say that if this is the idea, which idea is not supporting the author's argument. So it was a mixed, mixed questions, but from each passage, there were 2 questions at least that we will, we can easily able to do. But again, time being the main factor, the main point in the VARC section was to select the passages that we can do first and, that were doable. So that would be my analysis. Fine, great. Yes, Ankur ji. Hello. Yes, so I was there in the slot number 2, and my center is in Noida, just near to the Edushastra Center. So I was just like a regular visitor to the center, nothing like new for me, because the route and everything was very familiar to me. And this was a very organized center, because this is owned by the TCS Science Center. So this is very organized center, not a school or something like this. So they are very professional in doing all these things and checking everything. The TCS वाली building was same building है? Yes, the same building. So this is a मेरा सेंटर ऐसी जगह था कि मैंने बहुत बार चेक किया कि यही है क्या, क्योंकि अभी तक स्कूल कॉलेज में देखते थे हम. तो ये ऐसा सेंटर था, ऐसे लगता था कि जैसे आपने कभी वो उत्तम नगर जो एरिया है वहाँ पे गली में जाके, नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि देखना पड़ता था कि मैं सही जगह हूँ कि नहीं.
So this was like very common and very familiar because most of the online examinations are conducted at this particular center, and even the e-rickshaw vendors, they are very well known to this location. So there is a no hush was to search for the center and nothing was there. So I reached the center well in time, and this was the like proper center. Okay, so when I enter, so the environment is very professional and all the invigilators are properly dressed up, and typically they are having a dress and even the color code inside the center, which is a blue and white color code inside the center and all the walls. Okay, so then coming to the examination, when I started the examination, so obviously as the first section is English verbal section, VRC section. And if I talk about the VRC section, so the same thing is there. But if I first summarize the overall section, so for the slot number 2, the VRC is little bit moderate, not easy. And this is the but easier than the last year. So last year in the CAT 22, the English was little tough, but this year the English was little easy. Then coming to the DILR section, so as we have now seen for all the three section slots, so DI, the data integration part is typically missing this year. We have the logical reasoning clubbed with the some part of the calculation. So in a slot number 2, this is little difficult and same as the last year, that 22, CAT 22. And if I come to the quantitative section, so this is pretty more difficult and difficult compared to the last year and even the slot number. So now we can come to the slot 3 also. So the slot 2 is having the hardest part or the difficult part for the quantitative section. Now, so summarizing all the three sections individually. So particularly first coming to the English part. So English is having a same, the 16 questions and 4 passages. And first passage is related to some fashion industry, garment and pollution. As we people here in Delhi, we are facing a lot of pollution here. So this is related to fashion industry, pollution, garment, etc. The waste from the garment industry. And this is a easy, typically easy set. The first one was easy set, and the second set is like very, very promising for the candidates in the second slot. And this is related to Netflix. So we normally are associated with the Netflix part and watching movies and all those things. So this slot is having a passage related to Netflix, and this is easy, right? So most of the people started with this slot, assuming that okay, yes, we know about the Netflix and all the calculations and all those things. So this is basically asking for the good or bad habits about the say watching all these OTT and all these channels and all these type of things. Then the third passage is related to liberalism. Liberalism is dying, so again, persons are able to relate, but because this is a little bit more difficult in terms of the vocabulary and the sentence construction. So in a first go, you are not able to understand what the writer wants to say you or tell you, right? So the third passage is little bit tough compared to all the passages. And the fourth, again, little bit easy. That is a fact and interpretation of the history. So we all know about the Indian history, the international history. So all those things are very much related to this part. So passages are a little bit easy. English was a little bit easy in the second slot. And then coming to the grammar part, so para summary, odd sentences, para completion, para jumbles, all these things are there. And the same thing is that around 7 to 8 questions are theta based. That is type-in questions are there, which are theta based questions. But there is a one surprising element here in the English part. One question was carrying an instruction that this question is mandatory to attempt. This is only in second slot, not in the first slot, not in the third slot. One question was stating as an instruction that this question is mandatory to
do, right? So, but if you're not doing so, what will happen? Nobody knows, right? So there was no instruction about it, but this is a typical instruction that this is a mandatory question, and this was a say very very surprising element even to all the candidates of the slot number two, even to the invigilator, etc. When they were talking, and when we have discussed to the say different teachers in the vicinity, so they are also very surprised. Hey, what will happen if you have not done with this question? Right. So this is again like we have to wait for some time. What the administration will like. And this question was what? This question of reading comprehension. It's a reading comprehension. Reading comprehension. So because there is a one passage, and as we are talking about the one typical type, which is an except question. So these except questions are always there. So in all the slots, so similarly in my slot also, except questions were there, and these are very very जो कहते हैं ना बिल्कुल भर के क्वेश्चन आए थे आज एक्सेप्ट वाले. एक चीज हम मतलब हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. हम कैट में क्रिटिकल रीजनिंग इतना पुश नहीं करते थे. यस. जीमैट में हम क्रिटिकल रीजनिंग बहुत पुश करते थे. राइट. लेकिन कैट में इतना नहीं करते थे. कैट में मतलब उन्हें थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग पता चल जाए तो काफी है. लेकिन इस बार जो मतलब इसी बार क्या मतलब इसलिए अगर लास्ट के 2-3 साल के ट्रेंड देखते हैं तो वीएआरसी में अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग में एक्सेप्ट क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं तो ये तो जीमैट में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते थे. Yeah, so this year the inference based question and except questions are typically like almost you can say हर ही आरसी में है. हर आरसी में है. एक से दो क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट क्वेश्चन और inference based main idea. So those questions are very common this year, and these questions are typically making the English part little tougher. आपके लिए किंग मेकर सेक्शन को क्या है इस बार? This is the I would say the English because verbal would be yes. Out of all the three sections, quant is little bit more tougher, right? And then the DILR, and then coming to the English part. So English DILR तो काफी easy sets है. मुझे तो DILR में challenge नहीं है. Yeah, second simple tables थे, conditions थी, कुछ भी नहीं. Yes, but second slot is having a little bit of one particular slot moderate, and see this question is based on a grid. So 2 3x3 table, and this is particularly based on the concept of mean, median, and mode. Correct. So this was a difficult set in the slot number 2, and almost everyone has left this particular slot. So there was one slot which is the missing value table and company starting, closing year, right? So this is typically based on the say you can say the account books. आप account opening करते हैं, account closing करते हैं. So these are the kind of data which were there, and this is an easy set. So most of the people started with a little bit calculation, a little bit logical part. And in the DILR section, if I say you're done with say 4 to 5 questions, so you are around 90 percentile. But if you are done with say 8 to 9 questions, you are above 99%, right? 8 to 9 mean 2 set. Yes, 2 sets. So 2 sets. आप कह रहे 2 set में आप 99 create कर सकते हैं. Right. Yes. मुझे लगता है 3 तो doable है. हाँ 3 डुएबल है, बट आप अगर 99 तक का टच करते हैं तो 99 परसेंटाइल इज लाइक से 8 to 9 क्वेश्चन. तो 19.9 नहीं हिट कर पाएंगे. नहीं उसके लिए तो फिर मेरे को 10 और 11 तक टच करना पड़ेगा. 10 और 11 क्वेश्चन कह रहे हैं, 15 कह रहे हैं? नहीं क्वेश्चन. So this is like around 10 question, like around 27-28 marks if I talk. नहीं देखिए 4 सेट हैं 5 क्वेश्चन के. यस. तो 3 सेट पे 15 हो गया ना. हाँ 3 सेट पे 15 हो गया. सो दिस इज नॉट सेट्स, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन. सो बेसिकली लाइक इफ आई गो विद द DILR सेक्शन, तो DILR सेक्शन अगर आप 8 to 9 क्वेश्चन करें, और इसमें ना ऐसा भी था कि जैसे हर सेट में ना 2-3 क्वेश्चन टफ है, 2-3 क्वेश्चन इजी है.
तो सपोज जैसे अगर मैंने हाँ ये मीन वो मीडियन हमेशा मोड वाला बोला, हाँ, तो उसमें ना जो सारे 5 क्वेश्चन वो सारे के सारे टफ थे, but the first करेक्ट। set was for the arrangement. So arrangement of scores. So this is like we can relate to the matches which we have just seen. So matches, average, etc. So out of this particular set, 5 question, 2 are doable and 3 are tough. तो इसमें जैसे हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं, तो सिलेक्शन में ना हमें ये नहीं देखना है कि हम सेट की बात करें, हम क्वेश्चंस की बात करें। तो अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं और आप वो जो डुएबल क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में से अगर वो आप टेक कर रहे हो और उनको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप ये नहीं हम बोलेंगे कि आपने 2 सेट किए 3 सेट की। आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो वो हो सकता है 2 सेट में निकला है, वो हो सकता है 3 सेट में भी निकला है, करेक्ट। राइट। सो टिपिकली लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर द से 2 सेट, बट अब जैसे सेट की हम बात करते हैं, तो सेट की बात करना थोड़ा सा रॉन्ग है, बिकॉज हर सेट में आप ना सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो टिपिकली यू शुड टारगेट द क्वेश्चंस व्हिच आर इजियर। तो करेक्ट। क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो इन DILR 8 to 9 क्वेश्चंस आर देयर व्हिच आर फॉर द 99 परसेंटाइल। और अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 to 11 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन और कहीं से आपने पिक कर लिया, तो फिर आप 99.9 तक भी टच कर सकते हैं। And when I come to the quantitative, so quantitative, as in all the 3 sections, the same was there in that slot number 2. So algebra and arith. So these are the 2 things which are almost creating a 60% part. So in 80%. my 80%, 70-80%. So in algebra, I got to say 7 question and 1 question for the logarithm, 1 question for the simple equation, 2 questions from the sequence and series, 2 questions from the maxima minima, and 1 question from the inequalities. And if I talk about the arithmetic, so 1 from the time and distance, 1 from the time and work, 2 from the ratios, 1 is the simple interest, compound interest, 2 from the profit loss discount, 1 is from the mixture and elevation, and 1 is from the average. So, but yes, arithmetic was easy, but algebra is not easy. This is medium to difficult, right? So almost 80% part is there. In my slot, second slot, modern math, that is permutation, combination, set theory, right? So all those things were totally missing. कुछ भी नहीं था इनमें से। सारा कुछ जो है अरिथमेटिक और एल्जेब्रा ने ही कवर अप किया हुआ था। Just 1 question from the factors, which is from numbers, and 1 question from the divisibility. So just 2 questions from the number system, and geometry and mensuration, 1 question from the rectangle, 1 from the circle, and 1 from the quadrant. So this is the entire breakup for the quantitative section in the slot number 2. And if I talk about the expected percentile, particularly for the slot number 2, तो अगर आपका VARC में जो 40 से 42 का रेंज है, तो आप 99 परसेंटाइल पे हैं। सिमिलरली अगर आप DILR के लिए चेक करेंगे, तो करीब करीब 25 से 26 का जो है स्कोर, वो आपको 99 परसेंटाइल दिला देगा। एंड क्वांटिटेटिव जो है वो करीब करीब 28 से 30 का रहेगा रेंज। तो ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा कुछ 80 से 84 के बीच का अगर रेंज रहेगा, तो हम 99 परसेंटाइल आराम से टच कर पाएंगे। So this is all about आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज मैंने आज एक ऑब्जर्वेशन मतलब मैं शेयर करना चाहता हूँ। yes, yes. देखिए सर, हम एज ए टीचर कितनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं जी, पैरा समरी, आरसीस, पैराफ्रेजिंग करो, ये सब करो, पैरा कंप्लीशन में ये करो, पैरा जंबल में स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढो, ब्ला ब्ला ब्ला, मैंडेटरी पेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब वो टेस्ट जब हम देते हैं और जब टेस्ट में हम वो टाइम फैक्टर जब रन करता है, तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती जितना आपका इम्पल्स काम आता है। राइट। और वो इम्पल्स कैसे बनता है? वो आपकी ट्रेनिंग से बनता है। मतलब yes. अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं पैराफ्रेजिंग करने की कोशिश करी, लेकिन जब मैं आंसर कर रहा था तो मैं पैराफ्रेजिंग को देख भी नहीं रहा।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली हम टेस्ट इम्पल्स पे कर रहे हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हम गट फीलिंग पे वर्क कर रहे हैं। गट फीलिंग जैसे हम ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव फीलिंग में हमें कितनी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आप ऐसा होगा तो ऐसे करना, ऐसे कर, मतलब ट्रैफिक के जितने रूल्स होते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो इम्पल्स वर्क करता है। तो व्हाट एग्जैक्टली आज का जो टेस्ट का मेन लर्निंग है वो है कि ये स्मार्ट टेस्ट है। ये दिस इज नॉट फॉर इंटेलिजेंट पीपल एक्चुअली। ये टेस्ट का अगर मैं इवन नीट या इवन जेई से भी, आईटी से भी कंपेयर करूं तो इजी, बहुत इजी आंसर। लेकिन द होल थिंग इज एक्चुअली चेकिंग द स्मार्टनेस। ये स्मार्ट टेस्ट है। तो स्मार्ट टेस्ट के लिए सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 1-2 घंटे, तो 6 महीने में पढ़ लिया आपने, तो इजी हिट है। और आपका मतलब मैं क्या आज देखा, इस मैं ऐसे ही कुछ चीजों में सोचने लगा कि जो मैं स्ट्रेटेजी पढ़ाता हूँ वही लागू कर देते हैं। जैसे कि आरसी में पैराफ्रेज करते हैं। मैंने क्या नोटिस किया कि मैं पैराफ्रेज देख भी नहीं रहा था, मैं लिख तो रहा था, मैं बुकलेट में लिख रहा था पैराफ्रेज, लेकिन मैं देख नहीं रहा था। मैं जब हिट कर रहा था आंसर, मुझे पता ये आंसर है, लेकिन मैं उसे गट फीलिंग या इम्पल्सिव एक्ट ज्यादा बोलूंगा, रिफ्लेक्स एक्शन जिसे बोलते हैं। लेकिन इट वाज अ ग्रेट डे, मतलब अच्छा लगा। और मतलब वो टेंशन, वो ऐसे स्टूडेंट अच्छा फील होता है, मतलब आफ्टर द टेस्ट बहुत अच्छा लगता, पहले इतना अच्छा नहीं लगता। चलिए, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू एवरीवन एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सागर तो आई थिंक फूड कोर्ट में बैठा हुआ है, पूरी पार्टी आज सागर बना रहा है। यही करना चाहिए वैसे। मैं तो स्लॉट 3 के बाद, हम तो फैमिली मैन है, हमें घर वापस आना है, ये फैमिली मैन नहीं है, ये पार्टी में नहीं चला जाता, ये सही है तरीका। चलिए ठीक है, चलिए, and nice talking to everyone and good night. Chaliye, bye bye, see you. Good night, sir.